This conference will now be recorded. Now the today we start a one Salesforce project और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक ऐप बनाना चाहते हैं ऐप and this app name is a education and now इस education app के अंदर हमें need a requirement like a location कि apps की locations कहाँ पर होनी चाहिए got it now second option से यहाँ पर हमारे पास आता है like employee third option आता है student and fourth option आता है like account contact and login एंड इन सारी चीज के लिए हम काफी सारी चीजों का यूज करेंगे नाउ अगर हमें इस स्टेप्स की कोई भी एक ऐप क्रिएट करनी है कि लाइक दिस इज माय ऐप एंड नाउ ये सारे के सारे ऑप्शंस आए और इसके अंदर हम काफी सारी रूल्स और काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड ऑन करना चाहते हैं like today I'm using some things like I'm using validation and formula also जो हमने अभी तक यूज नहीं करा है तो फॉर्मूला फील्ड्स हो गया वैलिडेशन हो गया ये दो चीजें भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं तो ऑलरेडी हम ये सारी चीजें कर चुके हैं नाउ अगेन रिपीट एंड ऐड टू मोर थिंग्स गॉट इट द पॉइंट एवरीवन Yes. so now I'm just login with portal and I'm delete existing apps I'm just click on a app go to the app manager and I'm delete app number like delete and one more app I'm delete so now I'm just delete all custom apps and this is my standard app is available now if you can click on app launcher you can see there's a no any custom app is available right now now I'm just create first of all I'm just create an object I'm just click create on an object I'm just go to the object manager and you can see there are some standard object is available like account object is available and contact object is available and I think so I'm just already create a login object so where is the login yeah login object is also available now I'm just created two more objects I'm just created two more object his name is object is look like a employee so I'm just create a one object with the employee I'm just click on create and custom object and create a employee तो गाइस यहाँ पर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं लाइक एम्प्लॉय and employee always information is available in a text format and now click on save and new and I'm just create a one more like a student and I'm also is it click on save
After that, I'm just create a tab. So as per the requirement, key like there the 1, 2, 3, 4, 5 option is available or 6 option is available. 1, 2, 3, 4, 5, and 6 things is available. Now I'm just create a 6 tab. So I'm just go to and then click on home and search a tab. And these are the previous tab is available. I'm delete these all tabs. Right now there's a no any tab is available. Now click on a new and search a tab name is look like first tab is look like login. So I'm just click on building. Next, give the permission to everyone anywhere. These are in which application see this tab. So there's a no any application is available right now. So I'm not select any application. Now click on a save. So मैं अभी tab बना के रख रहा हूँ guys. Now click on a new. I'm just create one more tab is related to employee. Give the any style. Next, next. After that, I'm just create one more tab is like after login is it related to student. Then student, employee, login. Then click on new. And one more tab is available. I think so. The name of this location. So location. So I'm just create there's a no location or is available. So now I'm just create one more object and select create a custom tab and give the name is like street address. Address is on text format and now click on save. And then I'm just again click on a tab options and new. So guys, when you create a tab, first you create a object, then your tab is deployed. So now in a previous lecture, I'm always select a app from this location, but right now there's a no app is deployed by me. So I'm not select anything else. Got it the point? Guys, got it? Object and tab combination. Now these are my custom tabs, and now I'm using a two tabs as a standard. So next point, I'm create a app. How to create app? I'm just click on a app. Then go to the app manager and new lightning app. Give the app name is my education institution. Suppose the my education institute is my app name. The same as the developer name description. Provide cloud courses, cloud training. You can just give the any description. Choice is yours. Now we can also upload
pic if any pic is available. Now I'm upload this pic. So you can see the look like this type of look is coming in your app. Now click on a next, 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 and add a navigation item. So now I'm just add a account. After that, I'm add one more option is like a contact. Then I'm add like a employee. Then I'm add like a student. Then I'm add like street address. Then I'm add a login. Got it, guys? So these all tabs is coming. ये सारे tabs कैसे आए हैं? You know very well. Guys, got it the point? Yes, sir. Yes, sir. Now the click on a next. The permissions. Who can access this? So like assistant system administrator can access, and like system administrator, like this is the admin panel. This is a system administrator, and I'm also create a one user. The name is assistant administrator. And now click on save and finish. Now guys, I'm just create one app. If you can see this app, I'm just login with assistant system administrator. You can see your app is coming My Education Institute, and contact and ICCP login. These two option is coming, but after some time it's update all tabs. So but guys, no other tabs is update because this is a system administrator. I'm just added क्योंकि because I'm create a new object. तो मैंने कुछ न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाया और वो न्यू ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आई एम नॉट गिव द एनी परमिशन टू द असिस्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल. तो कौन से ऑब्जेक्ट आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिखाई दें लाइक कोई भी यूजर्स को दिखाई दें. सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द प्रोफाइल टैब और एडिट दिस प्रोफाइल. I'm just go to the profile and then click on assistant system administrator profile, edit, and now you can see the your My Education Institute app is display and which object it shows. So you can see the list of objects. This is a standard object. Now the account object is show, and contact objects is already show because these are the standard objects. But now you can see end of this. This is your custom object. Now I'm see the student, street address objects, and employee object. These all objects show in a assistant system administrator. And now click on save. Got it Create the वाला point, guys? हाँ create वाला uncheck था sir. जैसे admin create Any, system. वो क्रिएट नहीं कर पाएगा तो आएगा ना assistant फिर. no problem. Got it the point? These all setting. Anyone? Danish, Tatrugan, Chista, Amit, Ajay, got it? This all point? Got Yes it. sir. Yes, sir. So many times हमने करा है. Now you can see to the panel and then click on refresh. So need a time, guys. Give me 1 or 2 minutes. It's update. Don't worry.
I'm check after some time. After that, if you can click on an admin panel, if I'm just click on an admin panel, you can see the my education institution app is ready, and it show the all options: account, contact, employee, student, street address, and ICCP login. Got it? Now you can see कि अगर आप इन tabs को अपने according manage करना चाहते हो, you can see the pencil icon. Got it? The pencil icon. Now you can manage like account. The account options come to this location, and now the street address come to the first location, then contact, then employee, or after like that account statement. So you can change accordingly कि आप किस तरीके से इनको manage करना चाहते हैं, तो आप इनको drag and draw use कर सकते हैं और इनको manage कर सकते हैं. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Now I'm just come to the first of all is the validation rule. Now this is the account information is available, and now I'm just click on a new, and now I'm just give the name is like Rakesh, and now click on save. So you can see the star option is available, and now click on save. So this is the only the one validation rule is applied. The by default the name is a mandatory, but I'm apply the some other validation rule like if anybody comes save is like a mandatory rule is look like a rating is also required, phone number is also required, annual revenue is also required. So this types of required field is got in my point कि यहाँ पे only account requirement नहीं होनी चाहिए, मेरी other fields भी क्या होनी चाहिए, required होनी चाहिए. तो जो भी fields आप require करना चाहते हैं उसके लिए you can use a validation rule. So how to set a validation rule? Now I'm just go to the setup options and go to the account object. Click on object and then go to the account. Every object, the option is coming is a validation rule. So this is a validation rule option is available, and now you can add a validation service. So now click on new and give the name is like just give the name is account validation, and you can see the validation rule formula. So now guys you can insert a validation rule of this location. तो यहाँ पर आपको combinations बनाने पड़ेगा, और in this combination you can use a function tab. आपको यहाँ पे function tabs use करने पड़ेंगे, और function tabs के accordingly आपको अपने rules create करने पड़ेंगे. So now the first validation rule is like or. So I'm select a function is or. So this is a function is or का मतलब है check whether any of the argument are true and return true or false, return false only in all argument and for false. तो यहाँ पे मैं एक ऐसी terms and condition like मैं or formula use कर रहा हूँ. Inside the or formula I'm just add a rule, like a first rule is like is blank. Now the I'm using a first rule is blank. Is blank मतलब कि like a phone number. तो ये जो ब्रैकेट में आ रहा है एक्सप्रेशन इज ब्लैंक इज लाइक अ फोन नंबर, मैं एक फील्ड इंसर्ट कर रहा हूँ. आई एम गो टू द अकाउंट ऑब्जेक्ट और इनसाइड द अकाउंट ऑब्जेक्ट आई एम जस्ट सर्च फोन. तो लाइक
इज ब्लैंक फॉन्ट, तो यानी कि ये मेरा क्या है, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और है, कंडीशन क्या आती, ब्लैंक है ये, बट मैंने और बुला रखी है कि अगर ये ब्लैंक होता है तो ये कंडीशन को फॉल्स कर दे। तो यहाँ पे मैंडेटरी है कि मेरी कोई ना कोई वैल्यू होना जरूरी है। नाउ सेकंड पॉइंट इज लाइक I'm just talking about other fields. So like a different field is available. Like I'm using other field look like annual revenue or any other things. So choice is your कि annual revenue या other things आप use करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. Give me a minute guys. हेलो शत्रु। हाँ अमित जी बताइए। ये इसमें क्या रेड रेड आएगा, मैंडेटरी वाला साइन आ जाएगा क्या ये लगाने से? नहीं और हाँ इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप ब्लैंक छोड़ते हैं सेव तो एक नहीं होगा मैसेज क्या? आएगा कि हाँ, डेटा सेव नहीं होगा। तो दो चीजें होगी ना इसमें, एक तो या फिर डेटा सेव नहीं होगा, ये दूसरा उस पर्टिकुलर फील्ड में स्टार लग जाएगा, वो मैंडेटरी वाला साइन लग जाएगा। जैसे ईमेल का ही वैलिडेशन होता है तो जैसे एट द रेट ऑफ होना चाहिए किसी भी ईमेल में, तो वो यदि मान लीजिए हाँ हाँ किसी ऐसे ही बाय मिस्टेक जो है सिर्फ नेम ही लिखा गया या समथिंग कुछ लिखा गया, एट द रेट नहीं आया, तो दैट मतलब जैसे ही वो सर्च करेगा इस रूल्स के अनुसार से, तो एट द रेट ऑफ वो नहीं फाउंड करेगा तो वो फिर एरर मैसेज दे देगा। मैसेज में लिखना पड़ेगा एरर में, यू हैव इनपुट द हाँ, वो रॉन्ग सेव नंबर होगा। रॉन्ग ईमेल आईडी। एरर मैसेज आ रहा है ना नीचे, देखो ऐसे यहाँ लिखना पड़ेगा वो कि फिल द हाँ राइट एरर नंबर मैसेज, हाँ इफ इट। या ईमेल आईडी इज इनकरेक्ट, समथिंग लाइक हाँ दिस। ऐसा करो। तुम कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हो, क्या नाम है एप्लीकेशन का? अलग से कुछ बनाते हो जैसे Now प्रैक्टिस guys करते हो? start करते हैं। तो एक कॉल आ गया था। So now I'm just talking about like is blank and after that is one more thing कि अगर आप यहाँ पे multiple बनाना चाहते हो, so I'm just create another field. It's a mandatory field is required. So like I'm using I'm using a is null. The check whether an expression is null and return true or false. तो ये आपकी conditions है कि मेरी कोई भी condition अगर null होती है तो उसको क्या कर दे, वो false condition कर दे। तो now I'm just click on a add and set a expression like I'm set a expressions, or either I'm just add a field like annual revenue. I'm just adding a like a annual revenue, and just after that I'm just click on comma, and now I'm just add a one more field, or now at this time I'm just create a child and parent concept. So child or parent concept is like I'm just add a one fold like is blank again. So this is the one field is blank, and inside the is blank I'm add one more field is blank, and is it look like a text, लाइक कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ एक और फील्ड टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कराना चाहता हूँ लाइक रेवेन्यू और आइदर अ रेटिंग rating. So guys, I'm just give this field like a first this
is close, is null, is it close, like a is blank is a text, then it's close, and then it's close. So total one bracket is it start, one bracket is close, second bracket is close, and text third bracket is close, and fourth bracket. तो गाइस यहाँ पर ये मैंने कंडीशन दी हैं और ये सारे के सारे ब्रैकेट्स मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। और अगर आप ये अपना रूल्स भी देख सकते हैं कि ये हमारा सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए। इफ इट सिंटैक्स एरर, सो नाउ द एरर इज मिसिंग, यानी कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि मेरा कोई ना कोई एक ब्रैकेट है जो मैंने यहाँ पर लगाया है। नाउ आई एम जस्ट यूजिंग वन मोर ब्रैकेट नाउ एंड देन क्लिक चेक सिंटैक्स, और वो जो ब्रैकेट था वो था दिस वन। या गाइस एक्चुअली क्या, अगर आपको पता हो कि यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस लिए, पहला फंक्शन लिया है इस ब्लैंक, एंड नाउ इस ब्लैंक के अंदर मैंने टेक्स्ट को कॉल करा है, एंड टेक्स्ट के अंदर मैंने रेटिंग फील्ड को कॉल करा है। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? मैंने यहाँ पे दो फील्ड्स लिए हैं। पहली फील्ड है आपकी फंक्शन है इस ब्लैंक, इनसाइड द इस ब्लैंक इज टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैंने लिया है रेटिंग फील्ड। तो एक जो ब्रैकेट है मेरा, वो है मेरा पेरेंट ब्रैकेट, दिस वन टू दिस वन, सेकंड ब्रैकेट this one to this one, and third bracket this one to this one, and now check field, और now which error is coming कि अगर आपकी field नहीं आए तो like is required field। और मैंने लिख दिया कि अगर वहां पे कोई ये फील्ड मेरी ब्लैंक रहती है या अगर इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वहां पर ये मैसेज शो हो, प्लीज फिल इट्स रिक्वायर्ड। गॉट इट? एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? नाउ Yes, sir. click on save। So I'm just save this field and come to the home, and then again I'm back to this location। So I'm just click on like account tab। तो पहले देखिए मैंने राकेश लिखा था तो ये मेरी फील्ड इंटर हो गई थी। नाउ आई एम डिलीट दिस फील्ड and now add other things। click on new, and new में जाने के बाद like I'm just pull a name is like अजय, and अजय को लिखने के बाद I'm just click on save। तो क्या पूछ रहा है? प्लीज फिल इट्स रिक्वायर्ड। गॉट इट माय पॉइंट? बिकॉज कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है? लाइक अ रेटिंग फील्ड इज रिक्वायर्ड है, फोन नंबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, and like annual revenue is also required, and then click on save। if I'm add like again new contact, sorry, not on contact, I'm just go to the account options and then click on a new, and like I'm just adding like one more field is Amit, and like a phone number of Amit is, and now click on save। again it give you the error, like I'm just also select a rating, then click on save, it's again give me the error। now it's a mandatory field is required, like this is the annual, like and now click on a save। got it? the validation rules? सर मैंडेटरी फील्ड पे स्टार बन के क्यों नहीं आ रहा? वो स्टार आएगा, अभी मैं एक और चीज आगे कराऊंगा फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है? ओके, अभी आएगा। नाउ गाइस इफ यू रिमेंबर कि मैंने दो और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाए थे, लाइक वन इज एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट।
So when we create any objects, you know very well that automatically one field is at this field name is name, or this name field is always a important, is a required field. Now I'm just create कि मैं एक student जो field में बनाया है, like employee field मैंने बनाई है, मैं चाहता हूँ this is my student object or student tab, and this is my employee tab. So now the student and employee like a name, age, and employee ID. This field is required, and like a same as this field is required. Now I'm just go to the object and create a field. So I'm just click on a setup option, and go to the object manager. Click on student field, fields and objects, and new, and I'm just give the object. So I'm create a object कि मेरे को different fields requirement है. तो यहाँ पर मैं क्या है कि यहाँ पर मैं एक और फील्ड आपको एक्स्ट्रा यूज करने वाला हूँ जो हमने अभी तक नहीं करी है, एंड दिस फील्ड नेम इज फॉर्मूला फील्ड. So now first of all I'm just create like one more field like date. So I'm just select one more field is a date, कि मैं यहाँ पे एक और फील्ड एड ऑन करना चाहता हूँ like a date of birth. Date of birth. So now I'm just adding कि अगर कोई भी एम्प्लॉय की एंट्री होती है या किसी की एंट्री होती है तो मुझे पता रहे कि उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है और क्या चीज होनी चाहिए. So now I'm just go to the object, and date of birth के लिए we have select a date or either a date or time, but I'm select only date field, data type, and then click on a next. Give the name is like date of birth. So I'm just mention a date of birth. Now guys, you can see the always required value in this field in order to save. यानी कि if I'm just click, मैं यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ. Got it? What is the use of this option? मैं आपको बताऊंगा आगे. So I'm just click this object. ठीक है, required, always required a value in this field in order to save record. And now click on next. Give the permissions, then next, and save and new. Now I'm just create one more field is look like age field. Like I'm just create a one more field is the age. So or either I'm not created right now in the age field, I'm just using a student ID. First I'm set a student ID. So like a ID is always come in a number. I'm select the auto numbers option. Now click on next and give the field label. I'm select field name is like student ID, or either I'm select a student ID. Is it name is formula like ST ID, like a student ID, and give the bracket and give the value. I'm set a value. The my student ID start is like 0001. So I'm create a one more field and then click on next. It's visible to the system administrators. Then next, save and new. And if I'm just create कि यहाँ पर मैंने एक field create करी थी, I'm just right click on objects. So मैं यहाँ पे एक ऐसी terms and condition डालना चाहता हूँ guys कि in a
object manager, and I'm just click on object is a student. And inside the student, I'm just create a field. देखिए यहाँ पर मैंने एक फील्ड बनाई थी डेट ऑफ बर्थ. आई एम जस्ट कॉपी दिस नेम. मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करे तो ऑटोमेटिकली उसकी एज कैलकुलेट होके आ जाए. गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं अगर फील्ड सिलेक्ट करूं तो उसके लाइक अगर मैंने 2020 सिलेक्ट करा तो नाउ द टुडे इज 22, सो मैं चाहता हूं 22 इयर्स उसकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट आ जाए. उस कंडीशन में वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला. और फॉर्मूला के लिए आपके पास पहले ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, फील्ड होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ की. एंड नाउ जो फील्ड आप नेम ऐड करोगे, जो फील्ड नेम आप ऐड करोगे वो फील्ड नेम आपको रिक्वायर्ड होगा. So now I'm just click and come to the formula and now click on a next and then like AGEH and field always comes in a number. Age is always come in a number. The start on a 0. Then click on a next. Advanced formula I'm using. Select like a today. I'm select a value is equal to today. And after today, I'm just give the name of the field space slash 365.25. This is a calculation कि आप अगर कोई भी डेट है तो समटाइम वो 366 डेज में भी चली जाती है और समटाइम्स वो हमारी उसमें भी कैलकुलेट हो जाती है. तो आई एम सेट अ फील्ड इज इट date of birth, so like a today and date of birth and so got it the point guys? जैसे सर ये टुडे का जो डेट आया और नो टुडे date का of मतलब है कि टुडे का मतलब है जिस दिन भी आपने सिलेक्ट करा. हाँ, तो आज के दिन का मतलब जो है वो डेट आ जाएगा, मतलब आज से कैलकुलेट करेगा वो. या आज से कैलकुलेट करेगा टुडे एंड हाइफन डेट ऑफ बर्थ. तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनट ये नहीं लेना था. आई नो नीड अ दिस वन फील्ड नेम. लेबल नहीं लेना था, फील्ड नेम मेरे को लेना था. तो नाउ आई एम जस्ट कम टू या देन वो उसको मल्टीप्लाई कर लेगा 3.6525 से. तो इससे ये तो फार्मूला सर कैसे कैलकुलेट कैसे होगा? जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ ये 365.25, ये क्या है, स्टैंडर्ड है? ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कैलकुलेशन है कि लाइक Number of days है, समटाइम्स number क्या of होता है days 66 डेज का भी होता है. व्हाट इज ईयर कभी कभार Number of days. 66 डेज का भी होता है. तो कंप्लीट 66 डेज ना लेके हम 3.65.25 ले रहे हैं. जब आप जिस दिन फॉर्म फिल करोगे उस दिन तक की आपकी जो डेट कैलकुलेट होके आ जाएगी. बस. तो यहाँ पे देखिए अभी आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ चेक सिंटैक्स. तो सिंटैक्स एरर अगर होगा आपका तो नो सिंटैक्स एरर. एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ सर लेकिन ये फार्मूला आपने बनाया कैसे? देखिए जैसे फॉर्मूला today- यहाँ पर मैंने सिंपल सा बताया कि आपने जो भी टुडे के हिसाब से आपने जो भी डेट ली वो उस डेट से मल्टीप्लाई करेगा 365 डेज के हिसाब से. नहीं वो तो समझ गया सर, लेकिन हमको अगर बनाना हो तो टुडे फंक्शन ले लिया हमने, उसके बाद टुडे फंक्शन का मतलब है आज आपने अपना ईयर सेलेक्ट करा. हाँ अब आप 20 ईयर्स हो गए तो 20 ईयर्स के डेज सिलेक्ट करो प्लस उसको डिवाइड कर दो 365.25.
रीजन है क्योंकि कुछ ईयर्स आपके 366 के होंगे, कुछ 65 के होंगे, नहीं आपकी वो पूरे समझ इंटायर गया, एज। हाँ वो समझ गया। मैं कह रहा हूँ जैसे लिखा है एज इज इक्वल टू, यही तो फॉर्मूला नीचे जो हमने लिखा है, टुडे माइनस या कुछ ऐसा होगा ना सर, टुडे की जो डेट होगी माइनस या प्लस जो भी करना होगा, तो बीच में कुछ ऑपरेटर लगेगा ना। नहीं नहीं, यहाँ कोई ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा, ठीक है ये ना। हाइफन, यहाँ हाइफन, ये फंक्शन यूज हो रहा है टुडे, नहीं मैं ठीक है ना। हाइफन लगाया गया सर उसमें, नहीं हाइफन लगा हुआ है ऑलरेडी। मतलब ये तो हमने अपने से लगाया ना मैनुअली। ठीक है, आपकी डेट जो भी होगी टुडे, मतलब आज की डेट सिलेक्ट करी, हम्म। ठीक है, प्लस डेट ऑफ बर्थ 365 डेज, आपकी जो भी डेट होगी, ठीक है ना। अब उसको वो कैलकुलेट करेगा 365 डेज के हिसाब से, ओके। ठीक है ना। 365, अब यहाँ पे 366 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सारे ईयर तो 366 के नहीं हो सकते ना, चार साल अप्रोक्सीमेट में कैलकुलेशन है। तो मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, ये कैलकुलेशन आपको देखनी होगी। ठीक है गाइस। लेकिन कोई 0.25 क्यों लिखे? 365 भी तो लिख सकते हैं ना। अरे नहीं तो नहीं वो कुछ डेज, आप 20 साल में आपके सारे ईयर 360 65 के थोड़ी ना होंगे। चार नहीं वो समझ तो के आता है। आप 4 साल लिखना में चाहते अरे हो सर ये हाइफन का यूज क्या है यहाँ पे? हाइफन का यूज क्या है यहाँ पे, ये बताओ। मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, क्या है? ये हाइफन का यूज यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका हाइफन का यूज एडिंग है, ऐड। एडिंग। पहले देखें तो सही, मैंने सही लिखा भी है, 365 में नहीं लिखा, क्योंकि अगर नहीं आया तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये सिर्फ ईयर्स बताएगा या मंथ और डेज भी बता देगा? नहीं नहीं नहीं, ईयर्स बताएगा खाली, उसके हिसाब से आपको अपने मैथमेटिक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और मेरी मैथमेटिक्स तो तो बहुत स्ट्रांग है। फॉर्मूला तो सर इसमें भी लग जाएगा अगर ईयर्स और डेज भी चाहिए होंगे तो, एज में। हाँ हम हाँ, लेंथ। मेरी मैथमेटिक्स, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, आप लोग अपनी यूज करिए। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला ये लगाया, बट आपको एक पता होगा कि जब मैंने यहाँ पर एक फील्ड बनाई थी डेट ऑफ बर्थ की, तो मैंने उस पे ना एक रिक्वायर्ड चेक, ठीक है ना, एक लाइक मैं दोबारा से आता हूँ अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और मैं एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा हूँ, एंड नाउ चेक कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं एक एम्प्लॉयज के लिए एक फील्ड क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं जो फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ लाइक एम्प्लॉयज डेट ऑफ बर्थ। नाउ क्लिक ऑन अ नेक्स्ट, लाइक डेट ऑफ बर्थ फील्ड, एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेक नहीं लगा रहा। गॉट इट गाइस? इफ यू रिमेंबर कि पहले मैंने डेट ऑफ बर्थ फील्ड लगाई थी तो रिक्वायर्ड ऑप्शन पे चेक लगाया था, एंड अब मैंने कोई चेक बॉक्स नहीं लगाया है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, then click on next and save. So now I'm just go to the my app and then click on refresh. Now I'm just go to the employee and then add a employee like user one. Got it? And now click on save. तो देखिए मेरी यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडीज हो गई सेव, बट यहाँ पे ना तो कोई एम्प्लॉय आईडी जनरेट हुई, ना ही कोई डेट कैलकुलेशन हुई। बट अगर मैं यही चीज स्टूडेंट्स के अंदर जाके फिल करता हूँ, नाउ क्लिक ऑन अ न्यू, तो यहाँ पे देख रहे हो स्टार आ रहा है गाइस। गॉट इन माय पॉइंट? तो रो रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब है मैंडेटरी। मैंने सोचा गाइस इसमें गॉट भी इट द फॉर्मूला पॉइंट? लग जाएगा। नहीं नहीं,
तो यहाँ पे लाइक का मैंने यहाँ पे Yes, दिया sir. स्टूडेंट नेम इज लाइक का अजय, और अब देखना यहाँ पर लाइक का आई एम जस्ट कैलकुलेट अजय क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी, टेंशन मतलब पार्टी नहीं लेंगे हम। अजय कोई भी बता दो भाई, चलिए एनीवे। आधार कार्ड चेक। आधार कार्ड पहली बार किसी से सुन रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड चेक करें। चलो यार कोई बात नहीं, मत बताओ, मैं 2000 ले लिया हमने, अगस्त आया। 2000 मैंने, एंड आई एम जस्ट सिलेक्ट लाइक टुडे इज 25th, तो मैं ले लेता हूँ म्यूट पे बता रहा था मैं 25 जून। नाउ गाइस अब यहाँ पे देखिए दो चीजें मैंने मैंडेटरी करी हैं, तो दो तो फिल करनी पड़ेगी, बट अगर आपको पता हो कि इसके अलावा मैंने दो और हिडन फील्ड्स यहाँ पर हैं। एक स्टूडेंट आईडी वाली फील्ड आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है, यस और नो गाइस, और एक Yes. एज वाली Yes, sir. फील्ड नहीं दिख रही है, और एक एज वाली फील्ड नहीं दिख रही है। तो स्टूडेंट आईडी वाली मैंने ऑटो नंबर्स में डाली है कि कोई भी यहाँ पे फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो दोनों फील्ड्स आपको दिखाई देंगे। स्टूडेंट आईडी इज जनरेट एंड एज इज कैलकुलेट। गॉट इन माय पॉइंट? Yes, sir. Got it. Now I'm again enter a new contact. Contact में नहीं जाना, I'm just click on a student. Then new. Give the name is look like Amit. And like calculate age, is it look like अब नहीं बताएगा तो भाई हम यही सिलेक्ट कर लेंगे। And now click on see. So you can see. तो ये दो फील्ड, अब क्या है कि हमने कोई भी इंफॉर्मेशन करी, कोई भी कैंडिडेट अपने कोई भी कस्टमर या कोई भी किसी भी चीज की एंट्री होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वो उसकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे या कोई भी चीज लेंगे, ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उसकी यूनिक आईडी जनरेट होके आ गई। क्यों? क्योंकि हमने एक स्टूडेंट आईडी क्रिएट करी थी और उसके अंदर हमने ऑटो नंबर जनरेट कर दिया था, यस और नो। एंड नाउ द एज, और एज के अंदर मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट करा था। तो आपके ऊपर है कि आप किस टाइप के थ्रू मल्टीपल फॉर्मूलेस यूज करते हैं, और एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, तो वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन स्ट्रीट एड्रेस, तो स्ट्रीट एड्रेस के लिए भी मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक लैब कराई थी, इफ यू रिमेंबर, इज लुक लाइक होटल्स की। गाइस याद है होटल्स की मैंने एक ऐप कराई थी आपको, जी Yes, sir. होटल मैनेजमेंट। तो उसके अंदर sir. मैंने आपको बताया था लाइक डिपेंडेंसीज होती है एंड पेरेंट एंड चाइल्ड कॉन्सेप्ट होता है। तो बताइए दोबारा से कराऊं या कर लेंगे ये वाली? कर लेंगे पेरेंट चाइल्ड और पिक लिस्ट और डिपेंडेंसी। पेरेंट्स एंड चाइल्ड एंड पिक लिस्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलेगा कि लाइक अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन कहीं पर एड ऑन करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। इनसाइड द पेरेंट चाइल्ड लाइक यू कैन गिव द लाइक either you create a country, inside the country you can select a state, inside the state you can select a cities, so choice is yours. Same as like I'm just create a login, so I'm just create a login, so already I'm just click on new, so this is the last जो हमने last time बनाया था कि इधर स्टूडेंट लॉगिन करना है, क्लाउड लॉगिन करना है या एम्प्लॉय लॉगिन करना है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे कर चुके हैं। गॉट इट द पॉइंट गाइस? Got it. In tomorrow we have started one more important topic. Thank you guys. I think so enough for today.